in future, and we have one important unit that is determination of income and employment. वो अब तक शुरू भी नहीं किया है, and that has more weightage than national income. तो आप अगर याद करो नेशनल इनकम पे ही हमने इतना टाइम लगाया था, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट पे हमें और रिगर के साथ अटैक करना है. So if we are anyone who is not convinced, anyone who wants me to convince them a little more. ठीक है, then it is sorted. Do we have Arnav on call? Yes, ma'am. Arnav, let's talk about jail cost of living since you had a question for that. Yes, ma'am. ऐसा कर अर्नव, एक चीज ट्राई करते हैं. पहले आप मेरे को बताओ आपको क्या समझ आया हुआ है, एंड देन आई टॉक. बोलते रहो, मैं लिखती हूँ. Ma'am, according to ma'am, jail cost of living, ma'am, it was calculated by Dadabhai Nehruji, and ma'am, it was mainly on the consumption of I think the prisoner in the jail and the average food consumption of him. So मैम जो मैम उन्होंने पॉपुलेशन में मैम कंजम्पशन वाइज डिवाइड किया था कि मैम द 2/3 वर बोलते रहो, सुन रही हूँ. as ma'am he assumed that ma'am 1/3 of the total population ma'am consists of children, and ma'am as ma'am only adults stay in jail, he divided the population in two parts, as 1/3 of the population consists of children, and ma'am half of them, ma'am, that is 1/6, consumed very little, and the other half consumed uh, consumed diet, ma'am, that is half to the adult diet, and ma'am 2/3 of the population consists of adults, and ma'am they consume full diet. तो मैम एग्जैक्टली उन्होंने मैम ये मैम वेटेड एवरेज ऑफ कंजम्पशन कैसे निकाला, हम बस इसमें प्रॉब्लम आ रही थी. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस. जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है ही क्या? एज द नेम सेज, जेल में रहने का क्या कॉस्ट आ रहा है वो निकाल रहे हैं हम. और कॉस्ट भी कैसे निकाल रहे हैं, इन्होंने सारा अकोमोडेशन वगैरह नहीं देखा. ही सिंपली लुक्ड एट द मेन्यू देखा कि आप एक एडल्ट पर्सन ऑफ जेल को क्या दे रहे हो, उसका आपने रेलेवेंट प्राइसेस देखे और आपने खर्चा निकाल लिया कि एक एडल्ट का जेल में रहने का, खाने का इतना खर्चा है. बट आई कैन नॉट जनरलाइज दिस टू द एंटायर पॉपुलेशन. क्यों? क्योंकि आपने जब जेल का कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाला है, आपने मतलब एक एडल्ट के डाइट के हिसाब से निकाला है. सो फॉर व्हेन ही वांटेड टू use it for the entire population, he made certain assumptions. Now we may not agree with his assumptions. I'm just telling you what he did. Firstly, उन्होंने assume किया that we have 1/3 of children in our population and 2/3 of adults. मिलाकर मतलब total population. आप मानो कि जो आपका adult consume कर रहा है, I'm taking it as X. तो मतलब जो भी आपका diet है, उस पर जितना भी खर्चा हो रहा है, take it as X. फिर हमारी नेक्स्ट assumption आती है कि 1/3 of them were children. 1/3 में भी उन्होंने क्या किया है, half of them. तो 1/3 का half, 1/3 into 1/2 gives me 1/6. 1/3 का half is 1/6. एक half उसमें से बहुत लिटिल कंज्यूम करता है here. तो उसको ये कह रहे हैं, उसको आपने you've taken it as 0. ये तो ना के बराबर खा रहे हैं, तो जितना भी खा रहे हैं it is merely not included. बाकी जो आपके बच्चे खा रहे हैं, दे आर ईटिंग दैट इज हाफ ऑफ व्हाट एन अडल्ट ईट्स. तो मतलब दिस इज 1/6 जो आपकी पॉपुलेशन खा रही है, दैट इज 1/2 ऑफ X. डिड दिस मेक सेंस? यस मैम. पक्का ना? एडल्ट्स X कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये वाले बच्चे हाफ ऑफ X कंज्यूम कर रहे हैं. और 1/6 इसीलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि दिस इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, विच गिव्स मी X/12. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, यस मैम. अगर अब मैं टोटल करती हूँ, एक 1/6 है जो कुछ नहीं खा रहा है या फिर बहुत कम खा रहा है, then I have one group of population जो X/12 खा रहा है.
जो हमने ये किया 1/6 ऑफ चिल्ड्रन, और जो बाकी हमारे नॉर्मल एडल्ट्स हैं वो तो 2/3 ऑफ x खा रहे हैं, जिसको मैं 2x/3 लिख सकती हूँ. If you simplify this comes out to be, LCM ले लो, आपका LCM आता है 12. ये इनिशियल फिगर तो 0 ही हो जाती है. Now this is x/12 plus 2x/3. एक बार सॉल्व करके बताना if you have a pen around. थीटा, तो ये हो जाएगा पाई बाई ए 9x/12 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 9x/12 आएगा. -2 Sorry, where am I sin writing? of 2x upon 1 This comes plus out to be cos 9x/12. 2x इसको अगर मैं dx. सिंप्लीफाई कर देती हूँ तो मैं इसको 3x/4 कर सकती हूँ, which your book also writes. Do we have a Okay, question? ma'am. अर्नब पक्का? Yes, ma'am. Anyone else who has a question? सुनकर कोई क्वेश्चन आ गया होगा कि ये क्या कर रहे हो. एक लास्ट बारी बात करते हैं, देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. पूरी पॉपुलेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक पार्ट हमने लिया है एज एडल्ट्स, जो हम कह रहे हैं 2/3 ऑफ पॉपुलेशन है, और एक पार्ट हमने लिया है चिल्ड्रन, दैट इज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन. चिल्ड्रन को फर्दर डिवाइड किया है इधर. वन वी आर सेइंग 1/6 of them are consuming nothing, तो इन पे खाने का खर्चा 0 हो रहा है इफेक्टिवली, और बाकी 1/6 हाफ ऑफ एडल्ट का खा रहे हैं. तो अगर एडल्ट के खाने पे x का खर्चा है, इस 1/6 पर x/2 का खर्चा है. That effectively gives me x/12 if I simply simplify it. अब मुझे जानना है कि टोटल ऑन एन एवरेज कितना हम खर्चा कर रहे हैं. तो 2/3 जो आपका एडल्ट खा रहा है वो तो 2x/3 खा रहा है. एक पोर्शन x/12 है एंड नेक्स्ट इज 0. दिस इज वेटेड एवरेज पूरी पॉपुलेशन का, which gives me 3/4x when simplified. अगर अभी समझ आ गया है गुड, नहीं आया है आप फिर पढ़ेंगे अपने आप. जब फिर से डाउट आएगा we can again discuss this. That's not really an issue. Next, I know I'm supposed to talk about the expenditure method. ऐसा करो, 1 मिनट का ब्रेक लो. पहले आप लोग एक रजिस्टर लाओ, रजिस्टर और पेन लाओ, तब तक मैं तैयारी करती हूँ. I'll also give one question. Please be mentally ready. Can I start? Yes, ma'am. Sure. All right. If I'm looking at economic units, हम broadly 4 units की बात करते हैं, और ये units आप अभी भी समझ लो क्योंकि आगे income और employment में फिर से इनकी बात आएगी. एक हमारा unit होता है household. Household जो खर्चा करता है उस expenditure को हम कहते हैं private final consumption expenditure. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आता है? whatever expenditure you are doing for your consumption purposes. फाइनल हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाउसहोल्ड एनीवे कंज्यूमर्स मानते हैं हम, तो जो वो कंजम्पशन साइड है दैट मेक्स इट अ फाइनल गुड. सो इफ आई एम स्पेंडिंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स कौन से होते थे अगर याद हो तो? ड्यूरेबल गुड्स, वी हैव समथिंग लाइक नॉन ड्यूरेबल्स, वी हैड सेमी ड्यूरेबल्स. नॉन ड्यूरेबल्स का एक और नाम होता है, Exhaustible goods. Not non-durables, sorry. The other option that I was thinking of is services. So either you're consuming different types of goods or you're consuming services. Durables hote hain something that lasts for a long period of time. So if I talk about the fridge that I have in my home, or the washing machine that I have at my place, or the bed that I have, or the mirrors that I have, they go as durable goods. Semi-durables, jinki life
they also have a longer life, but not as long as a durable. So maybe if I can talk about my footwear or my clothes or phone on an average, 3-4 साल से ज़्यादा क्या चलता है? That goes as semi-durable. Non-durable would be consumed and gone. So if I talk about the bread that I buy on a daily basis, or the milk that I get supplied at my home, or the curd that is there. Services होते हैं not exactly a tangible good, but a service that we're availing. So if I go out for a haircut or if I go out for spa, all of that counts in service. Household जो इन पे खर्चा कर रहा है उसको हम मिलाकर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं. We have another unit which goes by the name of the government. गवर्नमेंट भी एक खर्चा करता है, उसको हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं. अब गवर्नमेंट का कंजम्पशन क्या हो सकता है? द सैलरीज दैट यू पेइंग टू द स्टाफ, द मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, जो पैसा आप मेंटेनेंस ऑफ रोड्स के लिए खर्च रहे हो, जो आप फार्मर्स को सब्सिडी दे रहे हो, जो आप लोन्स वेव ऑफ कर रहे हो, जो आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए चीज़ें चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, ऑल ऑफ दैट गोज इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. वन थिंग टू बी नोटेड, ये भी गवर्नमेंट का कंजम्पशन माना जाता है. गवर्नमेंट का दूसरा इन्वेस्टमेंट एंगल अभी हम दूसरी तरफ लेंगे, बट फॉर नाउ वट एवर कंजम्पशन दैट द गवर्नमेंट डज इज काउंटेड अंडर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. देन वी हैव अनदर यूनिट जो हम फर्म्स लेते हैं, बट दिस इज ब्रॉडर, सो आई कैन टेक इट एज इन्वेस्टमेंट यूनिट्स. अब जो इन्वेस्टमेंट होता है इसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. पहले नाम को ही समझ लेते हैं, नाम में क्या है. And I'm saying gross domestic capital formation. Capital formation means whatever increase in investment we have been doing. तो capital को form कर रहे हैं हम. Capital formation capital formation flow होगा या stock होगा? Flow. Flow. Why flow? Over a period of time. Because it is accumulated over a period of time. और अगर मैं capital बोलूँ, capital goes as stock because it is measured at a point of time. जब हम capital formation की बात कर रहे हैं, मतलब आप कितना और पैसा डालकर अपनी capital को increase कर रहे हो. अब ये इसके भी आगे दो parts हैं. One, I can say gross domestic fixed capital formation. अगर हम fixed capital की बात कर रहे हैं, that is basically investment in your assets that last for a long period of time. अब fixed में कौन कौन invest कर सकता है? आपका residents invest कर सकते हैं, आपकी firms invest कर सकती है और आपकी government invest कर सकती है. So if I say maybe 8.1, एक हमारा होता है gross public investment. Public investment होता है वो fixed investment जो government ने करी है. Think of an example of a public investment. Flyover I heard, roads I heard, any other thing that comes to our mind? Government और क्या public investment कर सकती है in a fixed asset? Street lights I'll accept, railways I'll accept. Railways setting up buying new trains will be a part of public investment. Maintaining your existing lines will be a part of government final consumption expenditure. So जब हम public investment में बात कर रहे हैं, we're talking about newer fixed assets that you're looking at. Shivam, you wanted to say something? Yeah, ma'am. A similar example would be setting up of a new metro track. Taken, बिल्कुल. Goes as a part of gross public investment. ये कर रही है government. अब आपकी firms भी invest करती हैं, उसको हम कहते हैं gross business fixed investment. इसका एक example सोच के बताइए. Businesses का कोई fixed asset में investment. The machines.
मशीनरी में इन्वेस्ट करना, टेकन. Building a Ma'am, land. Buying of land, buying of a building, building. setting up of a factory, investing in a plant, taken. All of that goes as a part of business fixed investment. Lastly, आपके residents भी कर सकते हैं invest, जिसको हम कहते हैं gross residential construction investment. अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनो. जब आपके हाउस होल्ड खर्चा करते हैं और ऑल दीज गुड्स, यहाँ पे ये जो गुड्स हमने बोले थे, ये जाते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में. आपका हाउस होल्ड भी इन्वेस्ट कर सकता है. सो सम पीपल buy a piece of land or an apartment and they do not use it for their own purposes. They may be giving it out on rent or they're even using it for their future generations के लिए आप लेके रख रहे हो. उसको हम उनकी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट कहते हैं. Another part of gross domestic fixed capital, all these three taken together comprises gross domestic fixed capital formation. Another part of gross domestic capital formation is change in stock. Change in stock कैसे निकाल रहे थे हम? Opening minus closing. Minus opening. I heard two different things. I'm closing stock minus opening stock. We're looking at closing minus opening as your change in stock. Someone to tell me, change in stock को हम count ही क्यों कर रहे हैं? Stock तो fixed investment है ही नहीं. Stock जहाँ तक देखा जाए वो तो investment ही नहीं है. Then why am I counting it in capital formation? Ma'am, but over a period of time there is change in the stocks. That's why we are counting it. Okay. Any other thoughts? Ma'am, because at the end of the year, some stock, if it is kept with the seller, then that value has been generated in an economy, but hasn't been accounted for yet. So therefore, we add the value of that is unleft stock in our expenditure method. Taken. Why are we including change in stock? By the end of the year, हम किसी भी businessman का expectation नहीं रख सकते कि उसके पास कोई stock नहीं है. So if I say that he started off with 100 units और जब production हुई तो 200 units की हुई and I'm saying कि sale भी उसने 100 की कर दी. So now he's left with 200 units. ये 200 units waste नहीं है. Just because they've not been sold in this year does not mean that they won't be sold next year. नेक्स्ट ईयर का के लिए भी हम इसको स्टॉक की तरह यूज करेंगे, लेकिन आज मैं दिखाऊंगी कि मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया. इसीलिए हम इसको इन्वेस्टमेंट में काउंट कर रहे हैं फॉर दिस ईयर. नेक्स्ट ईयर आई विल बी सेलिंग दिस. अनदर थिंग, सिंस आई एम सेलिंग इट नेक्स्ट ईयर, इसी को मैंने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में नहीं गिना है. इसको हमने अदर ब्रैकेट में लिया है, जिसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसकी लाइफ बहुत लॉन्ग है और हमको पता है. चेंज इन स्टॉक की लाइफ लॉन्ग नहीं है. इस साल हम इसको यहाँ पे काउंट कर रहे हैं एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट ईयर आई विल बी सेलिंग दिस ऑफ. पार्ट ए, दिस वन, एंड पार्ट बी taken together gives me gross domestic capital formation. कई बारी क्वेश्चन में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता है और चेंज इन स्टॉक गिवन होता है. यू आर सपोज्ड टू इग्नोर चेंज इन स्टॉक देयर, क्योंकि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है उसमें चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी है. कई बारी आपको ये ए और बी देंगे तो हम ऐड करके वील फाइंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. बहुत रेयरली हैव आई सीन देम गिविंग दिस. ये तीन वैसे कभी दिए नहीं हैं, लेकिन अगर दे देते हैं so we add them and we find gross domestic fixed capital formation. Fixed capital में we add change in stock and we find gross domestic capital formation. एक और मैनिपुलेशन कर देते हैं कभी कभी. क्या करेंगे, ये आपको देंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन.
भी बात करेंगे. This is one possibility. I'm keeping this on hold for now. We have another economic unit जिसको हम कहते हैं rest of the world. Rest of the world कैसे involved होता है? Whatever we are exporting, we add. Whatever we are importing, we subtract. जिसको हम मिलाकर net exports कहते हैं. Why do you think I am adding exports and subtracting imports? Ma'am, because whatsoever we are exporting to rest of the world, that is our income, and whatsoever we are importing from the rest of the world, we are actually giving out our money, so that will go as an expenditure. Okay. Anyone else who wants to add anything to this? मैम इम्पोर्ट्स हमें बेसिकली डोमेस्टिक प्रोड्यूस नहीं है हमारा, तो दैट्स व्हाई वी एक्सक्लूड देम. एंड एक्सपोर्ट्स हम अपना मतलब प्रोड्यूस कितना दे रहे हैं वो देखने के लिए, दैट्स व्हाई वी इंक्लूड दैट. Alright. When we're talking about production happening in my country, export चाहे मेरी domestic territory में use नहीं हो रहा है, but it has been produced in my country. If someone is spending their money on the good that has been produced domestically, I will add that. Import जो मैं use कर रही हूँ, खर्चा मैंने किया है, for example imported गाड़ी पे मैंने खर्चा किया है, वो खर्चा हम एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि वो खर्चा मैं उस चीज पे कर रही हूँ दैट हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड इन माय डोमेस्टिक टेरिटरी. जब हम एक्सपेंडिचर मेथड, जब हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, आई एम बेसिकली इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्शन दैट हैज हैपेंड विद इन माय डोमेस्टिक टेरिटरी. That is what will give me GDP. If I start including the goods that have not been produced in my domestic territory, then I am overinflating my GDP. तो आप एक्सपोर्ट इसीलिए ऐड कर रहे हो because the production has happened in your domestic territory, so you will include the value of that good. Import हम क्यों माइनस कर रहे हैं? Because this has not been produced in my domestic territory. So whatever expenditure households have done, अगर मैं कहती हूँ मैंने कोई गाड़ी खरीद ली imported, प्राइवेट फाइनल की तरफ से तो वो ऐड हो जाएगा यहाँ पर. हाउएवर इम्पोर्ट का काम होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना ताकि उसका इफेक्ट जीरो हो गया. You will not include the kharcha that you are doing on imported goods because that has not been produced in our domestic territory. Once we have all these four, we add them and we get something which is known as GDP at MPFC. आप खर्चा मार्केट प्राइस पे करते हो या फैक्टर कॉस्ट पे करते हो? Market price. आप मार्केट प्राइस पे करते हो. So we have our GDP MP. I hope we know how to turn GDP MP into NNPFC. Dhruv Mahajan, do you think you can help me with converting GDP MP into NNPFC? Aditya Gupta, can we try? Alright, I'll add NFIU. That makes it GNP at MP. अब क्या करना है? Subtract depreciation. That makes it NNP at MP. ठीक है. Using subtract NIT. That gives me NNPFC. Is this correct? Anyone who disagrees? If we are on the same page, I'm sending you one question on the group. If you want, I can also share it here.
I would want you people to attempt this question, please. If you do not have your phones around, I will just share it. Anji Shivam. Yeah, ma'am. Please share it on screen too. That is what I was asking for. Alright, just in case anyone wants to take a note of the question, please do, wants to take a note of the formula that we have, please do so, since I'll stop sharing it in next 5 seconds. Attempt this question as a formal question. 5 मिनट लीजिए, जैसे एक बोर्ड की आंसर शीट पे आंसर लिखेंगे वैसे एक आंसर लिखकर send them to me. I'll share the responses with the class. Ma'am, the question just went away. Because I'm sharing a solution. Does this look okay to us? Ma'am, I was just wondering, PFCE plus net domestic capital formation should be NDPMP, na? No. While if you look at net domestic capital formation in the formula instead of gross domestic capital formation, that will give you NDPMP. That's not an issue. So Yeah, she's ma'am, written. that I was confused. Hanji. So here your NDPMP comes out to be 1370. This time we're adding depreciation. Anyone who's not got 1300. Tanish, can we locate our error? Yes, ma'am. All right. I'll stop sharing this. I'll just take you back to just one word of caution, जो इस question में भी था.
अगर ग्रॉस की जगह हमको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता है एंड एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, तो ये सबको ऐड करके व्हाट आई गेट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। तो इस क्वेश्चन में हुआ है। दिस इज वन वेरी कॉमन ट्रिक। कई बार आपको यहाँ पर नेट दे देंगे या फिर आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे देंगे। एनी सॉर्ट ऑफ नेट हैपनिंग, प्लीज सी वेयर टू मेक अ चेंज। कई बार क्या होता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता है, डेप्रिसिएशन भी गिवन होता है। So if I can add the two and I will automatically then have gross domestic fixed capital formation. So you should know how to manipulate certain things. एक और चीज बताती हूँ, कई बारी होगा हमें गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और किसी और एंगल में हमें डेप्रिसिएशन चाहिए लेकिन इन्होंने दिया नहीं होगा। तो इफ आई से कि इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के कंटेंट सारे मिक्स कर दिए हैं, क्वेश्चन लार्जली इनकम मेथड का है, और अगर डेप्रिसिएशन चाहिए तो आप इन दोनों को यूज करके डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? Ma'am, GDPFC minus NDPFC. Alright, subtracting gross domestic capital formation, subtracting net domestic capital formation from gross domestic capital formation will give me depreciation. बहुत common trick है ये board की, every second year they give a trick something like this or another. So be ready with such, be ready for such things. Which makes me realize it is already time and I cannot start with my next lesson. So when we meet tomorrow, we start with the next lesson. Just in case any other doubt or topic do you want me to pick tomorrow, feel free to drop me a message. नहीं होगा तो I'll start with my chapter 9. For now, I'm posting your attendance question. Please go and mark your attendance. If you have any questions, you may stay back and ask. Sure, ma'am. Good day. To you too.